Assalamu alaikum and let's get writing. Expository nonfiction. Now, what is expository nonfiction? As the name suggests, expository means to expose. तो इस nonfiction में the aim is to expose the truth. इसकी definition अगर हम देखें तो it provides facts in a way that is educational and purposeful. So the aim here is कि हमने सच्चाई को लोगों को बताना है जो सच बात है, तो हम इसको बहुत ट्रूथफुली करते हैं, डिलिबरेटली करते हैं और एक एजुकेशन के लिए करते हैं. वी वांट टू एजुकेट पीपल अबाउट व्हाट द ट्रूथ इज़, अबाउट व्हाट द ट्रू फैक्ट्स आर, एंड वी डू इट वेरी डिलिबरेटली. डिलिबरेटली का क्या मतलब हुआ कि हमें पता है कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं. तो हमें कॉन्शियसली हम ये काम कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि हमने बस फ्लो में कह दिया, एक दिमाग में बात आई तो हमने कर दी. ये एक्चुअली हम एक पर्पस के लिए कर रहे हैं और एक एजुकेशन के काम के लिए हम ये बात कर रहे हैं. So the types of expository non-fiction that we have is books to gain knowledge. बहुत सारी आपने देखी होंगी. बिगेस्ट सीरीज ऑफ दिस काइंड इज़ द इंसाइक्लोपीडिया. ये पूरी एक बुक की सीरीज़ है जो कि इन्फॉर्म करने के लिए लिखी गई है. So you are just exposing the truth of this world and exposing the truth of people, places and events. And there are lots of tell me hows, tell me whys, ये dummies की पूरी series, ये सारी knowledge books हैं जो कि एक expository non-fiction के genre के अंदर आती हैं. The other ones examples are A Black Hole is Not a Hole by Caroline Sinami. Another one is Bone by Bone, comparing animal skeletons. Born in the Wild. Yeah, I mean, if you look at it, expository non-fiction, we've been talking about non-fiction for a bit, so you can see that it doesn't really have to be boring. So even when you are exposing the truth, you can do it creatively. And that's the key to writing. You have to keep your reader engaged, bugged. How insects change the world. Another sort of book that we have is the data books. यानी कि कोई report, कोई thesis, कोई research study. If you've done a research on climate change and you want to publish that, that becomes expository non-fiction. How is climate change affecting our world? Or how is it affecting Pakistan? So that whole book that you've written becomes a data book because you're giving facts, you're giving information, you've done research and you're presenting it in a book format, which becomes expository non-fiction. Another type is textbooks, जो students पढ़ते हैं और उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि जो आप information students को दे रहे हैं उसमें बेतहा सच्चाई हो, उसमें कहीं आप deviate नहीं कर सकते. फैक्ट्स के बारे में एक किसी ने बहुत मज़े की बात की कि what is my fact is not necessarily your fact. एक जगह से अगर मैं देखूंगी तो मुझे नंबर 16 नज़र आएगा और अगर मैं ऑपोजिट चली जाऊंगी तो वही नंबर मुझे 91 नज़र आएगा. So my fact is not necessarily your fact. However, both are facts in themselves. So when we are writing expository non-fiction, it is also important that if there are two versions of a fact, that you present both facts. Another kind is news articles. You have to be very, very responsible when you're writing for news because you're informing somebody and the other person or the audience or the reader is believing what you're saying. तो अगर आप कहते हैं कि जी कल बारिश होगी तो आप में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ जी कल बारिश होगी, वरना आप ही की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होती है. फिर लोग आपका यकीन नहीं करेंगे अगली दफ़ा जब आप उनसे कहेंगे कि जी बारिश होगी. सो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स. आप एक कैमरा ख़रीदते हैं या फ़ोन ख़रीदते हैं और आप कहते हैं कि जी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके साथ एक किताबचा आता है जिसमें बताता है कि ये फ़ोन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं. हाउ टू पुट इट ऑन, हाउ टू प्लग इन द वायर्स, हाउ टू चार्ज इट, हाउ टू फिक्स इट. सो दैट इज़ ऑल एक्सपोजिटरी नॉन फिक्शन. Recipes, how to cook certain food. Recipes is becoming a very, very big market for books. So if you ever want to become a writer and you want to start writing recipes, you have a good way of earning an income. अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं या आपकी नानी दादियों की अच्छी रेसिपीज़ हैं तो ज़रूर किताब लिखिए और रेसिपीज़ लिखिए उसमें, मगर अगेन मेक श्योर कि जो तरकीब है उसको बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखें, जिस तरह पकनी चाहिए उस तरह लिखें, ताकि आप जो सच्चाई है उस डिश की
वो एक्सपोज करके लोगों के पास लेकर जा रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है। सिटी और कंट्री गाइड्स बहुत से हैं, ये भी हर लोग अपने तरीके से लिखते हैं, कहाँ खाना चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अगेन exposing the truth that is out there. Language books, how to speak French, how to speak German. These are all learning, knowledge imparting, educating books, and they are part of the expository non-fiction. Self-help books, यानी कि अगर आप खुद सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, मगर बहुत सारी किताबें भी हैं जो लोगों ने लिखी हुई हैं कि अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो वो आप कैसे एक स्टेप बाय स्टेप आप वो पूरा प्रोसेस बताते हैं ताकि लोग उन चीज़ों से सीख सकें। तो हाउ डू यू राइट एन एक्सपोजिटरी नॉन फिक्शन? आप पहले जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस सब को समराइज़ कर लें और एक सिंथेसाइज कर लें आइडिया में, जो कि क्लियर है, लॉजिकल है और इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं रेसिपी की बात करती हूँ, तो अगर मुझे बताना है कि दाल कैसे बनाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये होगा मैं उनको बताऊँ कि दाल कौन सी होनी चाहिए, कितनी देर पकनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैं लिख लूँगी पहले, समराइज़ कर लूँगी, एंड देन आई विल स्टार्ट सेइंग ओके लेट्स नाउ स्टार्ट राइटिंग अ रेसिपी बुक। सो यू हैव टू बी क्लियर, कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड, एंड यू हैव टू गेट टू द पॉइंट वेरी क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली। अगर आप लंबी लंबी बात करेंगे, लंबी लंबी तमहीदें बांधेंगे, तो वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। अगर आप खुद सोचें, दाल की बात करते हैं हम दोबारा, दाल पकाना सिखा रहे हैं और आपने एक कई लंबी कहानी शुरू कर दी, तो बंदे को कहानी ज़्यादा याद रहेगी, दाल बनाना तो वो बेचारा पता नहीं भूखा ही रह जाएगा। सो विद एक्सपोजिटरी नॉन फिक्शन you have to make sure that you are clear and concise and organized in what you are doing and saying and writing, and you get to the point quickly and very, very efficiently. So have fun writing.